Hi all, coming down straight to the point. This is not so formal session. Coming straight to the point, this is the ISI Entrance 2026 official website from where you will apply. This is basically your application portal. So as you must have seen in the cover picture that this is a session which is completely based on the possible pattern change which we can expect in this year's ISI entrance. So the pattern change has not been mentioned in the prospectus. If you just go to this website, you will find out the prospectus is given. If you go to this prospectus, you will see ये जो prospectus है, prospectus में they have given all these things. Like this is normal, like whatever used to be there. ठीक है, पहले जो भी था, these things are mentioned. I mean, basically, the first part of the paper is MCQ, and the second part of the paper is descriptive, subjective type. The second part is basically called as UGB. First part is called UGA. So all these are, I mean, these are quite common things. These are known to you. BStat, BMath has the same entrance exam, right? So these things are all known to you. यहाँ पे there is no change at all. In this particular section, there is no change. The formats remains the same. So where is the problem? The problem is, if you go to this section, you will see that ये written test में जाओगे ना, if you go to this syllabus section, so BStat and BMath have the same syllabus. BStat and BMath have the same syllabus, so you can go to this, any of this, just click on any of this link, you will be redirected to this thing, this page. So there was no sample paper given over here. You go to the syllabus still remains the same. Whatever this was there, I mean, whatever it was there in all these years. So syllabus almost remains the same over here. ठीक है. एंड सम ऑफ यू वेर आस्किंग कि सर वेदर ये सिलेबस के बारे में, सिलेबस इन डिटेल सिलेबस तो यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. दीज टॉपिक्स आर जस्ट एन ओवरव्यू. सो इन डिटेल में तो यू डू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है. लाइकवाइज कैलकुलस में दिस इज, दे हैव मेंशन दिस टॉपिक अंडर कैलकुलस. सम ऑफ यू वेर आल्सो आस्किंग कि सर वेदर डू वी हैव टू स्टडी सीक्वेंस एंड सीरीज इन अ डिटेल बेसिस और नॉट. देखो, एक सीक्वेंस हो गया थी वो वाला सीक्वेंस. वन पार्ट ऑफ सीक्वेंस इज वेर यू लर्न द वो एपी जीपी एचपी टाइप दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. और ये जो सीक्वेंस है ना, दिस सीक्वेंस इज अ पार्ट ऑफ रियल एनालिसिस. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ फॉर्मल कोर्स ऑन रियल एनालिसिस यू शुड डू. ठीक है. रियल एनालिसिस वाला टच थोड़ा रहना चाहिए. So sequences, bounded sequences, they have mentioned sequences, bounded sequences, monoton sequences, limit of a sequence. So this itself has a lot of theorems. है ना, बहुत सारे थ्योरम्स है. लाइक स्टोल सिजारो थ्योरम टू फाइंड द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस. ठीक है. तो फिर कॉशीज थ्योरम टू फाइंड द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस. सो दीज थिंग्स आर देयर. तो ये सारी चीजें, तब देखो, ऑल थ्योरम्स आर नॉट मेंशन्ड ओवर हियर इन डिटेल. सो यू विल हैव टू learn it separately. Whatever theorems are there under limit of a sequence, you have to learn. Under monotone sequence, monotone convergence theorem is there. All these things are there which you need to learn over here. ठीक है ना. और बाकी जो लिमिट कंटिन्यूटी, दीज थिंग्स आर देयर. ऑल्सो अ टच ऑफ रियल एनालिसिस लेवल कैलकुलस शुड बी देयर. सो बेसिकली द मेन थिंग इज यू नीड टू लर्न अ बिट ऑफ रियल एनालिसिस एज वेल. ये मेन कंसर्न है. तो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, यहां पे जाओगे ना, हियर यू विल फाइंड आउट द सैंपल क्वेश्चंस आर गिवन. द सैंपल क्वेश्चंस वेर नॉट गिवन फॉर यूजीए टू और यूजीबी 2025 में देयर वर नो सैंपल क्वेश्चंस. But now in 2026, they have uploaded some sample questions over here. UGB paper, mein, there is no problem. This paper is the same as the 2025's UGB paper. You can see over here, these questions are all given in 2000. I mean, last year's 2025 mein, जो UGB paper था, this paper is actually from that year. ठीक है. So this is, which means that the UGB paper, the pattern remains the same. This pattern will remain the same. ठीक है. लेकिन ये जो UGA है, UGA में, if you figure out, if you just go to the sample question paper of UGA 2026, you will see all these questions are unique questions. They haven't taken some, previous year questions or something. These are all unique questions they have given. Right? So these are all unique questions you can see over here. The main fact is they have divided this question paper into two halves or two sections, not two halves, into two sections. Group A has 20 questions and Group B has 10 questions further. So Group A mein, these are all single choice correct, and Group B mein, these are all multiple correct questions, multiple select correct. I mean, multiple one or more options can be correct, multiple correct option type. Okay, so like A, B, C can be correct, and most likely there will be, there will not be any kind of partial markings what we are expecting. Any kind of partial markings offline exam में partial markings are usually not given. ठीक है. जो ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं ना, सो देयर पार्शियल मार्किंग्स आर नॉट गिवन अगर ये दिया जाएगा तो. ठीक है. सो एंड यू पीपल नो दिस थिंग दैट दिस मल्टीपल सेलेक्ट करेक्ट क्वेश्चंस
टाइप जो क्वेश्चंस है, दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट डेंजरस क्वेश्चंस, ठीक है, बिकॉज इफ वन गोज रॉन्ग द एंटायर क्वेश्चन गोज रॉन्ग. इनफैक्ट दीज क्वेश्चंस रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. और आप लोग तो जानते ही हो कि जो वट एवर टेस्ट सीरीज वी हैव कंडक्टेड टिल डेट, वट एवर टेस्ट वी हैव कंडक्टेड थ्रू आउट दिस ईयर, यू मस्ट हैव सीन ओवर देयर कि वो टेस्ट में ही तो वी हैव गिवन ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. आई मीन वी हैव गिवन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस, देन वी हैव गिवन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, है ना. So we have given all types of questions in our test series. So likewise, in some of the tests which we'll conduct next, in some of the tests, जो full length test होंगे ना, full length test में in some of the tests you will find out we will give the questions which will be based on multiple correct type as well. Multiple correct मतलब single correct भी दिया जाएगा, single correct can be given as well as multiple correct can be given as well. So this was the main concern, that your question paper can be divided. So we never know this thing because ISI has not mentioned this thing in their prospectus. They haven't mentioned this, kind of change or something, but they have given this thing. Why we are pointing this out? The reason being, in the previous year questions, you will see all these questions which they have made, like 2024 or 23, you will find out all these questions were, just questions which were taken from the previous year exams. है ना. All these questions जो है ना, ये 30 questions whatever they have given in the sample paper, are all these questions are from their, from previous years. I mean from previous year entrance exams से they have jumbled up some of the questions and they have created one sample paper, है ना. वहां से ले लिया, यहाँ से ले लिया. सपोज 2024 से, 2023 से, 21 से, सपोज आई एम टेकिंग सम क्वेश्चंस, दे आर टेकिंग सम क्वेश्चंस एंड दे आर क्रिएटिंग सम देयर ओन क्वेश्चन पेपर. तो यहाँ वहां से क्वेश्चन लेके दे आर क्रिएटिंग अ kind of a sample paper for a particular year. But this year they have specifically they have chosen these questions are all unique questions. ये जो questions उन्होंने choose किया है ना for this year sample paper, these are all unique questions and they have given group A and group B, मतलब ये classification they have given over here. This kind of classification they have given. ठीक है. और सैम्पल क्वेश्चंस मतलब ये नहीं कि क्वेश्चंस यू विल गेट सिमिलर क्वेश्चंस और सेम क्वेश्चंस फ्रॉम हियर. ठीक है. तो टॉपिक वाइज तो चलो ठीक है, टॉपिक वाइज यू कैन एक्सपेक्ट सिमिलर क्वेश्चंस फ्रॉम हियर. ठीक है ना. सिमिलर क्वेश्चंस तो आर फाइन. तो ये क्वेश्चंस पेपर देखना, दिस क्वेश्चन पेपर इज क्वाइट इजी. ये जो क्वेश्चन पेपर है, दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन पेपर, इजी सैम्पल क्वेश्चन पेपर. तो ये डेफिनेटली ट्राई तो आपको करना ही है. ठीक है. तो सो मोस्ट लाइकली देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर गेटिंग मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप. तो अगर वो होता है, सो यू पीपल नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर दैट.